we are going to start with the question answers part of chapter Madam Rides the Bus. Actually, in that, as we have discussed already in our previous video, we got to know that Madam Rides the Bus is a very sensitive story of first bus journey by an 8-year-old girl, Valli. And it was her first journey to the world outside her a very small age. She sees and tries to understand the mystery of life and death through incidents that she witnesses during the journey. Valli for short, was an 8 years old girl who wanted to know a number of things. She had no one to play with. A bus ran between her village and the nearest town, and Valli longed to travel by that bus. Listening to people who had traveled by the bus, she gathered all little details about the trip. She decided to gather enough money to travel by it. Once she had the required money, she went on the bus. The conductor was surprised to see a young girl traveling by herself, but jokingly called her madam and offered her the front seat. Wali observed everything very carefully. For example, the tree that seemed to be running towards them, a cow that suddenly moved in the front of the bus, and so on. When they reached the town, Wali gaped at everything in amazement. The big shops and so on. The conductor asked her to get down and have a look at the sights, but Wali refused. She said that she had come only for the bus ride. The conductor offered to buy a cold drink for her, but she refused. On her journey back, Wali saw a young cow dead by the roadside, and the conductor told Wali that it was the same cow been that had seen earlier. Wali felt very sad. The memory of the cow haunted her. When they reached the village, the conductor told her to come again, but to remember, to bring the face fair. When Valli reached home, she found an auntie with her mother. Her mother asked her where she had been. Valli did not reply, but only smiled secretly. So by this, we just know about Valli. If I'm just asking a question for your knowledge only, this is value-based question. What do you understand by Valli's nature and her hobbies? So what should be the answer? According to me, Valli Amai was an 8-year-old girl, and Valli was her pet name. She was curious by nature. Her favorite pastime was to stand in the doorway of her house and what was happening outside. She had no playmates. Watching the street gave her many new, unusual experiences. So try to do it once. Write down in the notebook about your own way. अपने खुद के अकॉर्डिंग बताओ कि उसका नेचर और उसकी हॉबीज क्या थी. I'll give you 1 minute. So start doing it. I hope you can understand now. Now, if I just want to ask, what is what was her wish about her first bus journey? So, according to you, what should be the answer be? Valli's wish. Yes, come on, get ready with your answer. So, according to me, answer should be she watched a bus and ran to and fro from her village to the nearest town. She develops a desire to ride on that bus. Day by day, her wish to make a journey by this bus becomes stronger and stronger. Okay. So my next question, this is just
knowledge of yours, that what do you understand by Wally's plan to have her first bus journey? आपके अकॉर्डिंग उसकी फर्स्ट बस जर्नी जो थी उसके लिए उसने क्या प्लान किया था? गेट रेडी विद योर आंसर. Be prepared in your mind what should be the plan, and how on the screen we do have the same question. See, we do have the same question. Yes. How did Valli plan for bus ride? Yes. So first of all, according to me, normal in normal language, Valli start gathering information about the bus. Then she listened carefully all the conversation between her neighbors and who regularly use the bus. She asked various questions to the people about the bus, how to ride the bus, and she gathered all the necessary information कि कौन से टाइम पे आती है, कौन से टाइम पे पहुंचती है, कितना किराया है, all these things. बस वहां तक विलेज से टाउन तक कितने बजे पहुंचती है, फिर टाउन से चलती कितने बजे, all these details she was collected, and then she calculated all the details and made a proper plan as to how to ride the bus. So according to the answer, we just know that Valli had been carefully listened since many days to the conversation between her neighbors and the people who regularly use the bus. वल्ली बहुत ध्यान से पिछले कुछ दिनों से बहुत केयरफुली उन सबकी कॉन्वर्सेशन को सुन रही थी, उन नेबर्स की और उन ट्रैवलर्स की जो रेगुलर उसमें ट्रेवल करते थे. उनसे वो क्वेश्चंस पूछती भी थी, कुछ उनकी बातों से उसको पता चला. देन फाइनली शी गॉट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट बस. She learned from them that the town was 6 miles away from her village. अब इस बात से उसको ये तो पता चल गया कि जो गांव है ना वो शहर से 6 मील की दूरी पर है. एंड द बस चार्ज 30 पैसे. बस का जो चार्ज है ना वो 30 पैसे का है एक जगह का. मतलब जैसे यहाँ से जो जाने का रास्ता है टाउन तक का, वो कैसा है, वो 30 पैसे का चार्ज उसका जो है वहां से वो लगेगा. ओके. एंड फाइनली वी जस्ट से कि उसको पता चल गया कि 6 मील का रास्ता है, 30 मिनट्स 30 पैसे का जो फेयर है ऑनवर्ड जर्नी का वन वे, एंड 45 मिनट्स टू कंप्लीट वन वे बस ट्रिप. मतलब उसका गांव से शहर पहुंचने में 45 मिनट्स लगेंगे, फिर वहां से वापस आने में अगेन 45 मिनट्स लगेंगे. एक साइड का किराया 30 पैसे, तो 30 पैसे प्लस 30 पैसे 60 पैसे इज द टोटल चार्ज फॉर द फेयर. She also made up her mind to stay in the bus and return in the same bus that would cost her 60 पैसे to and fro. अब उसने अपने माइंड में एक बात सेट कर ली कि उसको 60 पैसे इकट्ठे करने हैं अगर उसको बस से आना है और उसी बस में वापस आना है. उस बस से जाना है और उसी बस से वापस आना है. Now she was determined not to get down from the bus to roam around the town, as she didn't have enough money. Now she was determined to get down. अब उसने बिल्कुल अपने आप का अपना मन बिल्कुल पक्का कर लिया कि उसको बस में जाना है, शहर तक जाना है. और उसने अब उसको ये था कि शी डिडंट हैव इनफ मनी, अब उसके पास पैसे तो इतने नहीं थे. बट हेंस शी सेव्ड 60 पैसे मेटिकुलसली. बहुत मेहनत से उसने 60 पैसे इकट्ठे किए. एंड रेसिस्टेड ऑल काइंड्स ऑफ अर्जेस एंड टेम्पटेशन बाय टू बाय पेपरमिंट्स, गोलियां, टॉफीज, कैंडीज, टॉयज, हर चीज को छोड़कर, इवन राइड ऑन द मेरी गो राउंड, झूले तक छोड़ दिए उसने सिर्फ एक चीज के लिए, बिकॉज शी वांटेड टू राइड ऑन द बस. सो इट वाज Valli's secret adventurous bus trip that she had planned without her parents knowledge. ये सच में एक बहुत ही एडवेंचर्स उसके लिए ट्रिप था जो उसने अपने पेरेंट्स की नॉलेज के बिना प्लान किया था. Nextly, if I just want to ask how Valli brought the bus, so what should be your answer according to that? Be prepared in your mind that what should be the answer be. One fine spring day, Valli sneaked out in the house in the afternoon when her mother was taking a nap.
उसकी मम्मा सो रही थी. And when she was boarding the bus, the conductor offered her his hand to help her climb up to the bus, which she denied, and she showed him the money for the bus fare and stepped onto the bus. किराया दिखाया और बस में चढ़ गई. Now in question number 3, we do have a kind of a person is Valli. To answer the question, pick out the following sentences. आपको sentences में से बताना है clues के according कि वो आपको क्या लगता है. So if we just discuss about firstly about Valli, then we can say that Valli was a confident 8-year-old girl and she believed that her age was not a limiting factor. कि उसकी एज अभी बहुत छोटी है बस से ट्रेवल करने के लिए. बट शी कंसीडर हर सेल्फ टू बी अ ग्रोन अप पर्सन. लेकिन उसने अपने आप को एक ऐसा पर्सन कंसीडर किया कि वो लिटरली बड़ी है, युवा है और वो बच्ची नहीं है. So we need to complete this. Stop the bus, stop the bus. And a tiny hand was raised. Now we need to complete this phrase. बस को रोको, बस को रोको. उसने हाथ थोड़े से उठाए. Commandingly. Commandingly उसने उठाए उसने हाथ. Yes, I dash go to town. Yes, I simply have to go to town. मुझे क्या करना है? Simply टाउन में जाना है, शहर में जाना है. And good. Still standing outside the bus. Now we need to just complete it from the sentences in the chapter. There is nobody here, she said hotly. There is nobody here who is a child. यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा हो. Never mind, she said, I can get it on my, I can get on my, by myself. मैं खुद से चढ़ सकती हूँ. Next, you needn't bother about me. I. You needn't bother about me. I can take care of myself. Yes, I got it. I just got the line. Next, then she turned to the Yes. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope, search the line, search the line, search the line. Yes. Well, sir, I hope to see you again. Very good. Now we got to know all the lines. Yes. Now, in question number 4, why does conductor refer to Valli as a madam? अब यहाँ पर ये क्यों कमेंट किया गया, वल्ली को मैडम क्यों बुलाया गया? अब वली को मैडम इसलिए बुलाया क्योंकि वो थी तो बच्ची, बट वो ट्रीट ऐसे कर रही थी खुद को कि जैसे वो बहुत ग्रोइंग अप एज में है. सो दैट इज द ओनली रीजन दैट कंडक्टर रेफर्स हर एज मैडम. So let's move to the answer. What actually is given here? Yes, the conductor called Wali madam as she behaved, क्योंकि वो ऐसा ही behave कर रही थी like a grown up woman and responded irritably on being referred to as a child. एक तो वो बिहेव ऐसे कर रही थी कि वो बहुत बड़ी है और दूसरा अगर कोई उसको बच्चा कह रहा था तो उसका रिस्पॉन्स जो था ना वो बहुत इरिटेटिवली था. It means she was very confident kind of girl. Even she was only 8 years, but उसका जो spirit था, उसका जो confidence level था, that was too much high. So as she behaved like a grown-up woman and responded irritably on being referred to as a child. अगर कोई बच्चा बुला भी रहा है ना उसको, कोई उसको कह रहा है कि तुम बच्ची हो या ऐसा कुछ भी, तो literally she felt very bad and she reacted very irritating. So she behaved like a very grown up woman. So that's why conductor called her madam. She was an 8 years old girl. वो सिर्फ 8 साल की लड़की थी. And consider herself old enough. और वो ऐसा दिखा रही थी कि वो बहुत बड़ी है, कि वो अकेली बस में ट्रेवल कर सकती है. Besides इसके साथ साथ she also refused his help when he extended his hand to help her get into the bus. और यहाँ तक कि ना उसने हेल्प लेने के लिए भी मना कर दिया जब कंडक्टर ये सोच के कि बच्ची है उसको मैं ऊपर चढ़ा दूं. जब कंडक्टर उसको ऐसे बोल रहा था ना, देन स्टिल
क्या हुआ कि वो उसकी बात को नहीं मानी नहीं उसने उसकी बात, और वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे वो क्या है, बहुत बड़ी है और उसको किसी की भी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. Nextly, she replied commandingly that she could manage getting into the bus on herself. और उसने ऐसा दिखाया कि वो अकेली मैनेज कर सकती है कि बस में कैसे चढ़ना है. Nextly, in question number 5, find the lines in the text which tell you that Valli was enjoying her ride on the bus. We need to find out the lines from the paragraphs only from the chapter that needs to tell us that Valli was enjoying her ride on the bus. So Valli thoroughly enjoyed her bus ride to the town. The following lines from the text are a proof that exhibits the excitement. Which were the lines? Firstly, Valli devoured everything with her eyes. Secondly, the bus was now going along the bank of a canal and the road was very narrow. On one side there was a canal, and beyond it, palm trees, green land, grassland, distant mountains, and the blue, blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eye could see. So these are the lines by which we can say that literally she was enjoying her ride very much. Oh, it was all so wonderful. सब कुछ कितना सुंदर है. So by this also we got to know that literally she was enjoying her ride. Next, everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. Everyone laughed. अब वल्ली भी ज्वाइन कर रही है उनको उनकी हंसी में. So that was the only reason. That was also a reason that we can say that Valli literally was enjoying her ride very much. Nextly, suddenly Valli clapped her hands with glee, and a young cow, tail hair in the air, and was running very fast. अब यहाँ पर बात हो रही है कि वो अपने हाथों को से क्लैपिंग कर रही है. जब उसने उस गाय को देखा कि वो बस में आगे की तरफ कैसे चल रही है रोड के बिल्कुल बीचों बीच, तो उसको वो दृश्य ना बहुत ह्यूमरस लग रहा था. So she was literally very laugh. Okay, so we can say that she enjoyed the ride. Nextly, somehow this was very funny to Valli. Somehow this was very funny to Valli. वल्ली वो जो थी ना कभी कभी बहुत मतलब वेरी फनी. दिस वाज वेरी फनी, उसके लिए बहुत फनी था, तो इसलिए वो बहुत हंस रही थी और इतना हंस रही थी कि उसकी आंखों में आंसू थे. Next, Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the same time. वो बहुत बोर्ड फील कर रही थी और वो मतलब वॉज नॉट बोर्ड, वो बिल्कुल बोरिंग फील नहीं कर रही थी, जबकि वो एक बार उस रास्ते से सेम उसी रास्ते से जा चुकी थी, अब उसी रास्ते से वापस आ रही थी, बट स्टिल उसकी एक्साइटमेंट में उतना ही जोश था. उसकी उसकी एक्साइटमेंट अब भी उतनी थी जितनी की फर्स्ट टाइम में होती है. ठीक है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्टली, why does Valli refuse to look out of window? उसने विंडो से बाहर देखना मना क्यों कर दिया, जबकि पहले तो वो बहुत एक्साइटेड थी कि उसको विंडो से बाहर देखना है. एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड देयर, जो काव उसने वापस जब वो शहर से टाउन की तरफ जा रही थी, तो जो काव उसने देखी थी ना, वही काव अब रोड के एक साइड पे किसी व्हीकल से टकराने की वजह से उसकी डेथ हो गई. So that was very sad moment for Valli. So Valli refused to look out of the window on her way back to her village because she was upset. क्योंकि अब वो upset हो गई थी क्योंकि उसने dead body देखी थी cow की. That was running towards the bus, जो बस की तरफ आ रही थी while she was going to town. जब वो टाउन की तरफ जा रही थी ना, तो जिस गाय को उसने देखा था, जिस गाय को देखकर वो इतना हंस रही थी, वो बहुत ही ह्यूमरस फील कर रही थी, अब उसने उसी काऊ की डेड बॉडी देखी.
and the poor animal was hit by some fast moving vehicle on the road. अब वो बेचारा जो पशु था, जो वो गाय थी, वो किसी व्हीकल के आगे रोड पे टकरा गई होगी. And she was overcome with sadness and extremely frightened to look outside the bus window as the memory of the cow was haunting her. अब वो शी वॉज ओवरकम, अब वो सैडनेस से भर गई बहुत ज्यादा, और इतना डर गई, इतना घबरा गई कि अब उसको ना, उसका बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था विंडो से बाहर देखने का, क्योंकि उसको वही दृश्य जो है वो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था. ठीक है, so that was the reason. Nextly, in question number 7, what does Valli mean when she says I was just agreeing with what you said about things happening without your knowledge? वल्ली का क्या मतलब था जब उसने कैजुअली अपने घर पे जाके ये बोला कि हमारी नॉलेज के बिना भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती हैं. इस बात से मैं एग्री करती हूँ. बिकॉज वेन शी रीच्ड द होम ना, शी सॉ हर मदर was sitting with the aunt, and aunt simply asked from Valli कि वो कहाँ थी, but she didn't give any reply. And instead of giving any reply, she says, I was just agreeing. क्योंकि वो पहले इसी बारे में बात कर रहे थे. तो उसने कहा कि हाँ, मैं भी मम्मा के इन वर्ड से सहमत हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी नॉलेज में होती भी नहीं है और वो हो जाती हैं. So it means when Valli's mother casually mentioned that there are certain things that happen around them. When Valli's mother casually mentioned, वल्ली की मदर ने कैजुअली इस बात को बताया कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे चारों ओर जो हमारी नॉलेज के बिना होती हैं. देन वल्ली इंस्टेंटली एग्रीड, वो उसी क्षण अपनी मम्मा के उन वर्ड्स को पे एग्री हो गई और उसने कहा यस, आई वाज आल्सो जस्ट एग्री कि बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं, हो जाती है जो हमारी खुद की नॉलेज में नहीं होती. She was very happy about her adventurous trip to the town which she had taken without the knowledge of her parents. जो यात्रा उसने की अपने पेरेंट्स की नॉलेज में, अपने पेरेंट्स की नॉलेज में डाले बिना जो ट्रैवलिंग उसने की, उस ट्रैवलिंग से वो बहुत ही खुश थी. I hope you will understand this question. Now, question number 8. The author describes the feelings or the things that Valli sees from an 8 years old point of view. Yes, the author had described various things according to the prescription of that girl, that she was fascinating by the bus, and watching the bus fill with a new set of people each time was a source of unending joy for her. First of all, तो उसका जो परसेप्शन था कि वो बहुत अट्रैक्ट थी बस को लेकर, फिर उसके लिए वो एक सोर्स था अनएंडिंग जॉय का. ठीक है, फिर इट्स आउटसाइड पेंटेड a gleaming white and green strips along with the silver overhead bar stone, मतलब उसको वो बस को कंपेयर कर रही है. ठीक है, it means she was attracted towards the color of the bus. Okay, and as we know the bus was new, so the seats are very soft and luxurious. ठीक है, and the author wanted to show the excitement of a girl. वो author जो था वो just describe करना चाहता था अपने excitement को, to travel in the luxury of a bus for the first time. Then the blue sky. Okay, that was also a prescription. Acres and acres of green fields उसने देखे, and it was just उसने जो दिखाया zeal और enthusiasm दिखाया अपने nature में for all these things. अच्छा, बट अब जब उसने डेड बॉडी देखी ना काऊ की, तो उससे क्या हो गया, टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गए. अब वो उसकी जो मेमोरी थी, उसके माइंड में जो मेमोरी थी काऊ की वांटेड की, अब उसकी वजह से शी रिफ्यूज टू लुक आउटसाइड द विंडो, उसने विंडो के बाहर देखना ही बंद कर दिया. बट अगेन with beautifully described the typical reactions, बहुत beautifully describe किया author ने, and the behavior of a 8 year old child in an ideal manner, बहुत अच्छे तरीके से उसके behavior को दिखाया गया है. ठीक है, इस poem के थ्रू. I hope you will understand this. So till here, thank you, have a nice day.